नमस्ते दोस्तों, आज फिर से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन और इसको इंडिफरेंस कर्व किसको कहते हैं ये हम पहले समझ लेते हैं। Indifference curve is a graphical representation of a combined product that gives similar kind of satisfaction to a consumer, thereby making them indifferent. Every point on the indifference curve shows that an individual or a consumer is indifferent between the two products as it gives him same kind of utility। यहाँ पर बताया गया है कि एक इंडिफरेंस कर्व होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि उसके बीच में ढेर सारे कमोडिटीज़ के बीच में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो एक ही होता है। और every point on the indifferent curve shows that individual or a consumer is indifferent between the two products as it gives him the same kind of utility। कंज्यूमर है वो दो प्रोडक्ट के बीच में इंडिफरेंट रहकर काम करते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेफ्ट विच नहीं दिया था, लेफ्ट विच गिव्स एन डेफिनेशन। According to him, a single indifference curve shows the different combination of x and y that yield equal satisfaction to the consumer। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं फिगर में लाकर। The indifference line is shown in figure 1.3. The slope of this line negative because each point in the indifference curve shows the same level of utility. The amount of one product must increases if the quantity of the product decreases. That is, if a consumer reduces the enjoyment of the product Y while enjoying the two products X and Y, he has to enjoy additional group of X as compensation. However, in the case of indifference lines, it is assumed that while increasing the consumption of the same amount of X, the amount of sacrifice of the product gradually decreases. In mathematical terms, when the enjoyment of the X product increases, the absolute value of the slope of the indifference line is gradually decreased. In this case, we use marginal rate of substitution MRS concept। यहाँ पर IC का स्लोप वो नेगेटिव होता है क्योंकि IC का हर एक पॉइंट इंडिफरेंस कर्व वो दिखाता है कि वो हर एक पॉइंट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दिखाता है। इसलिए एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज करके दूसरा प्रोडक्ट का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ता है, इसलिए नेगेटिव स्लोप हो जाता है। इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू समझते हैं। Some properties of indifference curve। Indifference curve is convex to the origin। The shape of indifference curve is strictly convex to the origin. Due to the law of diminishing marginal utility, a consumer is always willing to sacrifice lesser unit of a commodity for every additional unit of another good। दूसरा characteristics, indifference curve always slopes downwards from left to right, and indifference curve has a negative slope. It slopes downward from left to right. If a consumer decides to have one more unit of a commodity, apples, quantity of another goods, orange, must fall so that the total satisfaction remains same।
Third characteristics, a higher indifference curve represents higher level of satisfaction. The position of the indifference line indicates the degree of utility. The indifference line, which is high on the right side of a specified indifference line, expresses more satisfaction, and the natural line at a lower position on the left side of specified natural line expresses relatively low satisfaction. Fourth characteristics हो गया, indifference curves cannot intersect each other. This can be explained in a hypothetical situation where two indifference curves intersect. The point of intersection implies that a combination of a commodities on the higher curve offers the same level of satisfaction as that on the lower difference curve, which violates the basic assumption ICS. Hence, ICS cannot intersect each other. यानी कि इस वीडियो में आज हमने वो इंडिफरेंस कर्व किससे कहते हैं, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ विथ फिगर हमने देख लिया है। दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस मैप के बारे में।